So now I was telling you about here आपको कैसे पता चलेगा कि this is going to be a quadratic equation because the maximum power of x हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है. So because जब भी ऐसी आपके पास situation होगी when you have the maximum power of x is 2, so that means कि this is going to be a quadratic equation. Now बेटा एक और चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि यार the basic difference between expression and equation आपको पता है कि x plus 3 if this is written in this form that means कि ये हम क्या कह रहे हैं कि this is an expression and if there is an equals to 0 so this is going to be an equation, right? So ये आपके पास basic difference था. In this particular class we are going to discuss about quadratic equations. ठीक है, हमने expression तो discuss कर लिए थे previously जब हम factorization का process कर रहे थे. Okay, so now always please remember one thing which you guys need to clear it. देखो हमेशा से आपके पास quadratic equation को solve करने के 3 methods हैं. Number 1 is you are going to solve it by factorization, and second one you're going to solve it with completing square method. And the third one and the last one is quadratic formula. ठीक है, अब ये कब यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर we are going to study about that thing कि ये आप कब और कहाँ यूज कर रहे होगे. Right now what we are going to do is in today's class we are going to complete factorization and completing square method. ये हम आज की क्लास के अंदर 100% complete करेंगे and we'll also discuss the past paper questions of these two particular methods. Okay, so now here is one example for you guys. Okay, let's suppose you have a particular question over here 5c square plus 25c. देखो आपके पास again you have a maximum power of c is 2, so this is a quadratic equation. Now what you need to do is कि first of all you are going to take 5c as a common. तो आपने 5c को common निकाला and inside the bracket this remains c plus 5 equals to 0. So you are going to write 5c equals to 0 and c plus 5 equals to 0. So the first value of c is going to be 0 and the other value is going to be c equals to -5. So that's how you're going to get two values of c. ये आपके पास इस तरह से आ जाएगी. Okay, so there is one more example for you guys. So what we have is b square minus 7b. Again, you will take b as a common. So b minus 7 equals to 0. Okay, now you will write b equals to 0 and b minus 7 equals to 0. So the value is going to be b equals to 7. So that's how you're going to solve it. All of you, is that clear? कोई confusion तो नहीं है किसी को, मुझे बता दें. If there is any sort of confusion, please do let me know. और अगर क्लियर भी है तो प्लीज लिख लें और मुझे बता दें कि it is 100% clear. Okay, so in the next part what we are supposed to do, here is a quadratic equation again, but अब हमारे पास कितनी टर्म्स है बेटा, अब हमारे पास 3 टर्म्स है, राइट? So what we are supposed to do is कि हमें middle term breaking का process already पता था. So we are going to solve it like this. आपको पता है कि this is going to be your middle term. मैं आपको already सिखा चुका हूँ कि +6. Whenever you have a +6, आपने 6 के 2 फैक्टर्स ऐसे निकाले जिनको आपको एड अप करते हुए you are supposed to make a 5x. So what you are going to do is कि you are going to write x square plus 3x plus 2x plus 6 equals to 0 and then आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इन दोनों में से and the last two terms इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे. The first common is x plus 3 and then you have plus 2, so it remains x plus 3. Again these two brackets are exactly same. मैंने ही कहा था कि if these two brackets are exactly same that means you are doing it correctly. So you'll write x plus 2 x plus 3 equals to 0. So x plus 2 equals to 0. Haya, we just started. If there is any confusion, please do let me know. I'll explain it again. Okay, we have just started. So x plus 2 equals to 0, x plus 3 equals to 0. आप इनको अलग अलग सॉल्व करो. So the first value is going to be x equals to -2 and the other value is going to be -3. So that's how you're going to solve it. ये आपके पास दो वैल्यूज में आंसर आ जाएंगे quadratic equation के. Okay, आया? Is there any further problem? मैं एक और पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, प्लीज उसे भी देख लो आप. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज डू लेट मी नो. Okay, so now I'm solving part D for you guys. So what you need to do is in this particular part you have 6y square and then you have -20. बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि you will first multiply 6 by 20. So when you multiply 6 by 20 it becomes a -120. ठीक है, अब -1 क्या मतलब था? नेगेटिव साइन इंडिकेट आपको ये करता था you need two factors जिनको आप एक दूसरे के साथ माइनस करा सको. तो 120 के दो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिन दोनों को मैं आपस में माइनस कर रहा हूँ and I want to create a
So अगर किसी बच्चे को कंफ्यूज हो बेटा आप यहाँ पे क्या करिए 20 times plus 2 going to get a 60 then again 2 32 then you have a 15 so it becomes 2 ठीक है so that's how you're going to get it अब आपको यहाँ से दो ऐसे नंबर निकाले हैं जिनको दो नंबर्स को आप दूसरे के मल्टीप्लाई कराओ so you are going to make 7 और अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ माइनस कराओ यू आर गोइंग टू मेक अ 7 सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप यहाँ से एक वाला नंबर ये पिक करोगे 8 and then the other number which you are going to pick is basically 50 so what you need to do is you are supposed to write 6y square then you will write plus 15y and the second sign जो आप लगाओगे वो आप अपनी मर्जी से लगाओगे minus 8y minus 20 equals to 0 then what you need to do is but it's a rule जब कभी when there is always a number a coefficient attached with any square variable or alphabet तो आपको लास्ट वाले नंबर के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और आपको उसके प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ेंगे ठीक है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है बरी मुझे बता दिएगा so now what you need to do is you will take the common between the last two terms so the common between them is 3y and you are getting 2 plus 5 and here we have a comma minus 4 so inside the bracket you have 2y plus 5 and again these two brackets are exactly same ठीक है so 3y minus 4 2y plus 5 equals to 0 then you are supposed to solve it separately and that's how you're going to get the value of y मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली रहा हूँ if there is any confusion बेटा मुझे बता दिएगा आप लोग तो मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है so that's how we are going to solve it all of you is that clear कोई confusion है तो please मुझे बता दें I'll be solving the last example for you guys please chat option में मुझे लिख के बता दें कि it's clear हया पतीना okay so now I'm solving the last example over here देखो लास्ट एग्जांपल में द फर्स्ट थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू सबसे पहले आप लिखते हो स्क्वायर वाली टर्म सो यू राइट x स्क्वायर देन यू राइट 7x minus 18 और आप वही उसी वे के अंदर इसे सिंपलीफाई मतलब सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिस वे में आप कर रहे हो अगेन यू विल टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड यू नीड टू टेक टू फैक्टर्स ऑफ 18 जिससे आप क्या बना सको 7 बना सको तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सो यू आर गोइंग टू राइट x स्क्वायर plus 9x minus 2 right 8 and then again you're going to do the same process तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन आपकी कंप्लीट हो गई है लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन फैक्टराइजेशन अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड इफ इट इज 100% क्लियर देन प्लीज डू मेंशन इट तो ताकि हम आगे मूव करें टुवर्ड्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड Okay, Barira, I'm explaining it one more time. Please do listen it carefully. So, देखो, what we are supposed to do is कि सबसे पहले we need to rearrange it x square 7x and minus 18, right? अब हमने क्या करा बरीरा कि I have taken out the prime factors of 18. So 18 के prime factors आपके पास क्या थे 2 and then you have 9 and then 3 and then again 3. So basically you are going to make 2 multiplied by 3 multiply by 3 so basically you are supposed to make two numbers over here और आपको दो numbers यहाँ से ऐसे generate करने हैं जिनको आप multiply करो so you are going to get an 18 और इन दोनों को आप minus कराओ तो आपके पास क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए 7 is going to be your middle term तो आपने बोला कि 9 and 2 so that's how you are going to get it so that's why you have written 9x minus 2x because आप देखोगे इनको solve करवाने के बाद you are getting a 7x so now what will you do is you will take the common between the first two term and the last two terms so that becomes x plus 9 minus 2 and you
you have x plus 9, again these two brackets are exactly same, तो आप इन्हें completely solve करवा दोगे, x minus 2, x plus 9 equals to 0, x minus 2 equals to 0, so the first value is going to be plus 2, x plus 9 equals to 0, the second value is going to be minus 9. ठीक है, it's clear now? बरीरा कोई confusion तो नहीं है? Okay, so we are moving towards completing square method. Beta, always remember one thing before doing the completing square method. You always need to remember these two identities. आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या हो रहा है. So these are the identities: a plus b whole square. It is going to be a square plus 2ab plus b square, and the other one is a minus b whole square. It is going to be a square minus 2ab plus b square. So that's how you're going to like do the complete part. आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए जिनसे अगर आप क्या करोगे इससे सॉल्व करोगे. बेसिकली क्या होगा, मैं उसका पूरा एक्सप्लेन करता हूँ सिनेरियो को, जरा गौर से सुनना, ठीक है. अच्छा, लाइक इसके सवाल कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास हमेशा से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म जो होगी वो इस फॉर्म में नॉर्मली लिखी जाएगी, y equals to a x minus b whole square plus c. Now how do you know कि the question is basically कमिंग ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ये एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि बेटा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें. देखो, कभी भी एग्जामिनर ये वर्डिंग नहीं लिखता कि आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें. वो सिर्फ इंडिकेशन देता है, और वो कैसे इंडिकेशन देता है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ. तो फर्स्ट एग्जांपल इज कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x. एग्जामिनर कह रहा है कि राइट डाउन इन दिस फॉर्म. ठीक है, आपसे उसने कह दिया कि इस फॉर्म के अंदर आप लिख के दिखाएं. सो बेसिकली कौन सी फॉर्म से वो आपके कह रहा है, x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी. सो ये आपके पास इंडिकेट करेगा ये पर्टिकुलर चीज दिस फॉर्म की, ये आपके पास इज टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, हमेशा से जब भी इस फॉर्म की बात करेगा. नाउ हाउ यू आर सपोज्ड टू डू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो फर्स्ट यू विल राइट योर एक्सप्रेशन व्हिच इज x स्क्वायर प्लस 7x. ये सबसे पहले आपने कर देना है, राइट. सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने ये चीजें लिखने के बाद x स्क्वायर प्लस 7x जब आपने लिख लिया, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि बेटा आपके पास व्हाटएवर द नंबर, व्हाटएवर, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी नंबर जो x के साथ लिखा हुआ हो या व्हाटएवर द नंबर व्हिच इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, आपको उसे क्या करना है, आपको उसे डिवाइड बाय 2 कराना है. एंड एक बार आपने स्क्वायर करा है, पहले तो आपने एड अप करा है, एंड सेम उसी चीज को आपने क्या कराना है, माइनस कराना है. आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस वन मोर टाइम, प्लीज लिसन इट केयरफुली. जो एडमिट्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत आसानी होने वाली है बिकॉज यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड. व्हाटएवर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज, कोई भी x के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ है आप उसे डिवाइड बाय 2 करें एंड देन स्क्वायर करें. एक बार प्लस कराओ, एक बार माइनस कराओ. अच्छा, अब क्या होगा, अब बेटा आपको सिर्फ यहाँ तक ऑब्जर्व करना है, यहाँ तक सिर्फ आप ऑब्जर्व करो. सो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी कंप्लीट टर्म को जहां तक मैंने यहाँ पे वो करा हुआ है, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओवर है. मैं इसे जरा हाईलाइट कर दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है. इस पोर्शन के ऊपर मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को बंद कर दूंगा. अब बंद कैसे करूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी माय ए एंड दिस इज गोइंग टू बी माय बी. तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज ये वाला आपके पास क्या हुआ है, ऑलरेडी एक्सपेंड हुआ है, तो आई वांट टू जस्ट क्लोज इट डाउन. सो आई विल राइट x because a लिखूंगा और b लिखूंगा and then I'll write a whole square. All of you, is that clear? और ये वाली पूरी चीज जो ऊपर लिखी हुई थी 7/2 whole square, इसे मैं ऑलरेडी कॉपी करूंगा. 7 का स्क्वायर इज 49 and this becomes 4. Is that clear? कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दें. All of you, is that clear? Okay, so basically this was a kind of question जो आपके पास आ सकता है. No, this chapter is basically from book 1, book 3, chapter number 1.
This is quadratic equations. Okay, so moving towards one and समझ में आए कि किस तरह से अगर एग्जामिनर आप लोगों से सॉल्व करने के लिए कह सकता है, ठीक है? Okay, so here is another example of this particular method. So we have x square plus 4x minus 3 equals 0. ठीक है? So the examiner in the first part, the examiner is asking a right form. कौन सी form? x minus b whole square plus c equals to 0. And in the b part, the examiner is asking a hence find the values of x. Again, what you need to do, first thing आपने क्या लिखा, आपने a part solve करना है, x square plus 4x minus 3. You know कि आपके पास जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x का that is 4, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, you are going to write x square plus 4x, again 4 divided by 2 square, आपने एड अप कराया, देन उसे माइनस भी आपने कराया, -3. ठीक है, इसे जरा सिंप्लीफाई करा दो क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो x स्क्वायर 4x एंड ये डिवाइड हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2 स्क्वायर. ठीक है, -3. मैं यहाँ तक क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ. सो आई एम क्लोजिंग इट डाउन, सो आई विल राइट x plus 2 whole square. This becomes -4, this becomes -3, and there was also equals to 0. ठीक है, so this is going to be x plus 2 whole square and -7 equals to 0. ठीक है, अच्छा. Now examiner can ask you about 3 to 4 things. अब वो कैसे पूछ सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जामिनर आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है. Now in this particular part, examiner can ask you बेटे what is the value of b. So b आप यहाँ पे देख रहे हो, there is negative b over there, so negative b is basically equals to 2. So b is going to be -2, and whatever the value of c is going to be -7. तो कभी कभार एग्जामिनर इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है, तो मैं ये साथ में कैटर कर रहा हूँ. Now I'm moving towards the next part, part B. पार्ट बी में एग्जामिनर ने आपसे बोला है कि बेटा आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं. तो बिकॉज यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दिस प्रोसेस, यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू नाउ, यू राइट x plus 2 whole square -7 equals to 0, and then what you are going to do is you are going to shift the 7 on that side, it becomes +7. now because you have a square over here, so आप यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है both sides के ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा. and now what will happen, x plus 2 and this becomes plus minus square root 7. so आप इसको completely जब पूरा solve करोगे square root 7 को, so this becomes plus minus 2.65. एक आपने प्लस के साथ सॉल्व कराना है, x plus 2 equals to 2.65, the plus value, and the negative value is going to be x plus 2 equals to -2.65. so this becomes 2. This was 65. 2.65 minus 2. So the first value becomes x equals to 0.65, and the other value becomes -2.65 minus 2, and it is going to be -4.65. So all of you, that's how you are going to solve these kind of questions. So please do let me know if there is any confusion. Now we'll do some possible questions और हम आगे इसको further solve करते हैं. कोई भी confusion तो please मुझे बता दें. Abdullah, is this thing clear? Haya? और बाकी लोग भी बता दें मुझे. Have you guys copied the whole thing? Copy कर लिया आप लोगों ने, तो मैं आगे move करूँ. Haya, you can use your chair option, beta.
Okay, now all of you are moving towards some past paper questions. If there is any further confusion, then please do let me know. Okay. Okay, now all of you please try out this particular question. We have already done these kind of questions. हमने एक इसके अंदर लिखना सीखा था और ये वाला question attempt करो. This is a question of 3 marks. So the first thing what is happening in this particular part is कि it's written 5x plus 1, 5x upon x plus 1 minus 2 upon x minus 1. So देखो now what you need to do is कि आपने लिखा 5x plus 1 minus 2x minus 1. So because these two brackets are different from each other, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इससे मल्टीप्लाई कराना है x minus 1 के साथ, आपने x minus 1 के साथ, and this will be multiplied by x plus 1 and x plus 1, right, equals to 8. So now what happens is 5x minus 1 minus 2 x plus 1, and then you have x plus 1 x minus 1 equals to 8. So now that's how you're going to solve it. When you multiply 5x by x minus 1, it becomes 5x squared minus 5x, और ये आपके पास हो जाएगा minus 2x minus 2. ठीक है. So this becomes, अगर आप इसे completely solve करोगे, it becomes x square minus 1 equals to 8. तो अब आप क्या करोगे? You are going to shift the whole thing on that side. आपने इसे completely shift करा. First आप इन्हें थोड़ा simplify करा दो. 5x square minus 7x minus 2, और ये shift हो जाएगा. This becomes x square minus 1. 5x square minus 7x minus 2, 8x square minus 8. आप इन सारी टर्म्स को उस तरह शिफ्ट कर लो. It is going to be 8x square minus 5x plus 7x, and you have minus 8 was already there, और ये हो जाएगा plus 2. All of you now, you guys can solve it. अब आप लोग कर सकते हो solve इसे completely. अब आपको सिंपली क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. ओके, प्लीज यूज द चैट ऑप्शन, मुझे बता दें, कैन यू गाइस सॉल्व इट? Okay, I'm doing the factorization process. 3x square. आपने 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, then you have to factor 9x minus 2x minus 6 equals to 0. So you are supposed to take 3x is a common, तो आपने 3x को common निकाला, this becomes x plus 3. Then minus 2, again you have x plus 3 equals to 0. 3x minus 2 x plus 3 equals to 0. So this becomes 3x minus 2 equals to 0. X plus 3 equals to 0. 3x equals to 2, x equals to 2 over 3. So the first value and the second value is x equals to minus 3. So that's how you're going to solve it. These are the two values. But आप यहाँ पे marking scheme भी देख सकते हो. Marking scheme से you guys can confirm the value कि these are the values. ठीक है. अब now I'm moving towards one another question जो मैं आपको completing square method पे एक सवाल solve करवाना चाह रहा हूँ. Examiner आपको actual में किस तरह से कोई question देता है, वो बड़ा important situation है. I'm going to search for that question. Okay, so these kind of questions basically examiner आपसे कभी कभार पूछेगा, and this is from paper 1 June 2013. ये paper 1 का सवाल है आपके पास. ठीक है.
अब देखो उसने एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है कि एग्जामिनर इज फर्स्ट आस्किंग यू कि बेटा आप इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलवेज नीड टू कंसीडर दिस थिंग कि आपको इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, सो यू आर गोइंग टू राइट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. आपकी क्या करना है कि बिकॉज यू नो कि यार द नंबर व्हिच इज अटैच्ड विद x इज 6, सो आपको 6 को डिवाइड बाय 2 कराना है. एक बार आपने प्लस कराया, एक बार आपने माइनस कराया, ठीक है. एंड दिस बिकम्स लाइक दिस. और जरा इसको सिंपलीफाई वगैरह कराओ तो माइनस 6x एंड प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3. अब देखो जरा इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना यहाँ तक. दिस इज गोइंग टू बी योर, अगर मैं यहाँ पे जरा मार्किंग करना स्टार्ट करूँ, so this is going to be my A and this is going to be my B. So if I close it down, अगर मैं इसको जरा बंद करने की कोशिश करूंगा, so I'll close it down like x minus 3 whole square minus 9 plus 3, so x minus 3 whole square minus 6. So this is going to be my answer, x minus 3 whole square minus 6. इस पे मुझे आराम से एक मार्क मिल जाएंगे. So now in the second part examiner बोला है hence solve. देखो ऊपर वाली चीज आपको करिए, आपको इसी फॉर्म के अंदर आंसर देना है. यू आर नॉट सपोज टू टेक अ स्क्वायर रूट. व्हाई? बिकॉज देखो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता पेपर 1 के अंदर, तो आपसे एग्जामिनर कंप्लीटली सॉल्व कभी भी नहीं कराएगा. सो आपने क्या करना है, यहीं पे कंटिन्यूएशन करनी है. x minus 3 whole square minus 6 equals to 0. So what will happen is if you are going to shift 6 on that side becomes a positive 6. Now you'll apply the square root on both sides of the situation. So ये आपके both side of the equation एक square root आ गया, तो s becomes x minus 3 plus minus square root 6. So अगर आप यहाँ पे 3 को शिफ्ट करो, so it becomes 3 plus minus square root 6. So देख रहे हो आप कि आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है वो इस फॉर्म के अंदर आ रही है. So you're simply going to write 3 plus minus square root 6. So that's how you are going to solve the quadratic equation question. जब भी आपके पास quadratic equation का क्वेश्चन आएगा, तो फैक्टराइजेशन से भी आपने सॉल्व कर लिया, कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से भी आपने सॉल्व कर लिया, तो दो मेथड आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिए हैं. ठीक है. So the only method which is left is quadratic formula. वो method है, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. Now I'm giving you just 2 minutes, or if there is any further confusion then please मुझसे पूछना. You guys can even use your mic.